Yes, Jyotsna ji, please. Jyotsna ma'am, You can. Yes. Yeah. Okay. So I'll be talking about the Institute of Open Schooling. So this is one open schooling system. So let me start with what kind of program this NIOS has. NIOS has OBE program, Open Basic Education, and this has 3 levels basically, A, B, and C. I think English is okay, or Hindi में बात करना है. What is preferable? Just let me know. Both, if possible. Fine, ma'am. हाँ, हिंदी is also okay. So OBE में 3 levels हैं, A, B और C. So A level basically जो है वो grade 3 level का है. B is grade 5 level and C is grade 8 level के equivalent होता है. And then there is secondary education and senior secondary education, which is secondary education मतलब 10th standard के equivalent है, and senior secondary education standard के equivalent है. Other than this, they have this vocational education course programs and life enrichment programs. And NIS programs are basically for people professional, those who are working and they want to study further, or people who have dropped out from schools or are living in remote areas, बहुत ही विलेज एरियाज में रहते हैं जहाँ पे स्कूल्स नहीं है, या जिनके बच्चों को स्पेशल नीड्स है, या जिनको एथलीट्स या आर्टिस्ट होते हैं, जिनको कोई गेम्स में रुचि होती है, जैसे टेनिस खेलना है या क्रिकेट खेलना है, ऐसे बच्चे भी NIOS ऑप्ट करते हैं. बेसिकली इस NIOS का एडवांटेज ये है कि दे आर वेरी फ्लेक्सिबल. आप अपने टाइम से उसको ले सकते हैं. आप एक बार एडमिशन लेते हो तो जनरली आपको 9 years का टाइम रहता है फिनिश करने के लिए. एंड दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली. आपको बुक्स एंड एवरीथिंग सब कुछ ऑनलाइन मिल जाए. उसके वीडियो हैं, उनके वर्कशीट हैं. सो अपने टाइम से सेल्फ पेस्ड लर्निंग होता है उनका. आप अपने एक्सेस करके आप पढ़ सकते हैं. और उनके जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. लाइक इन अ ईयर आपके पास 2 बार एग्जाम्स होते हैं. एक बार मार्च में होता है और एक अक्टूबर में होता है. अदर देन दैट देयर इज ऑल्सो एन ऑन डिमांड फैसिलिटी विच इज अवेलेबल. मतलब अगर आपको बीच में ही एग्जाम देना है तो आप वो ऑन डिमांड भी कर सकते हैं. उसके लिए थोड़े चार्जेस रहते हैं, बट यूजुअली चार्जेस आर वेरी नॉमिनल, नॉट सो ग्रेट. एंड NIOS का और एक एडवांटेज ये है कि वो रिकॉग्नाइज्ड भी है. यू हैव फ्रीडम टू चूज सब्जेक्ट्स. आपको जो जो सब्जेक्ट्स मिलते हैं उसमें बहुत सारे चॉइसेस है आपको कंपेयर टू अदर स्टेट बोर्ड्स. इसमें एक क्राइटेरिया है लाइक ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, जो 20 मार्क का होता है, जिसमें आपको पेपर दिया जाता है 20 मार्क्स का, एंड यू गेट 2 months टू डू इट. वो ओपन बुक्स जैसा होता है. सो इट इज क्वाइट स्कोरिंग हो जाता है बच्चों के लिए. सो दिस इज वन मोर फीचर ऑफ NIOS. अदर देन दिस इनके पास ऑनलाइन आप सब कुछ इनका भी ऑनलाइन हो गया है. राइट फ्रॉम एडमिशन यू कैन डू इट ऑनलाइन टू सबमिटिंग योर TMAs एंड एग्जामिनेशन. सिर्फ मेन एग्जाम के लिए आपको जाना पड़ता है, बट TMA जो रिटर्न 20 मार्क्स का पेपर रहता है वो आप लिख के आप जस्ट अपलोड भी कर सकते हैं ऑनलाइन. आप एक बार एडमिशन लेते हैं, उसके बाद आपके पास 5 साल रहते हैं फिनिश करने के लिए. उसमें आप 9 chances ले सकते हैं एक क्लास फिनिश करने के लिए, ग्रेड 3 हो या 5 हो, 8 हो या 10 हो, जो भी हो. आपको अगर हेल्प चाहिए तो दे हैव समथिंग कॉल्ड एज पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स, जिसको ये लोग स्टडी सेंटर भी कहते हैं या AI भी कहते हैं. तो वहां पे जाके आपको बहुत सारा गाइडेंस भी मिलता है. यूजुअली इनके आई थिंक 15 Saturdays होते हैं जहाँ पे आप जाके दे विल गाइड यू विथ व्हाटएवर सब्जेक्ट्स यू हैव गिवन, एंड उस पे आपको गाइड करते हैं. उसमें आपका प्रैक्टिकल भी आ जाता है. दे टेक केयर ऑफ प्रैक्टिकल्स ऑल्सो. अभी अदर देन दिस NIOS में एक एक्स्ट्रा एंड विच इज अ गुड फैसिलिटी विच दे हैव इज यू कैन टेक ट्रांसफर क्रेडिट ऑफ 2 subjects. मतलब आप सपोज स्टेट बोर्ड में 10th पास किए हैं, आप फेल हो गए 2-3 सब्जेक्ट्स में, लेकिन 2 या 3 सब्जेक्ट में अगर आप पास हुए हैं तो वो सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं एंड फिर NIOS में ट्राई कर सकते हैं. सो किसी और बोर्ड के जो सब्जेक्ट्स हैं अगर आप वहां पे पास हुए हैं तो वहां से आप वो 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे लेके आ सकते हैं.
एंड इसमें आपको अगेन राइटिंग ऑफ द पेपर NIOS में जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही पेपर लिखें, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं. सो यू कैन चूज योर मीडियम ऑफ राइटिंग ऑल्सो. एंड ये सारे जो एडमिशन्स होते हैं ABC लेवल के लिए, इसको मिनिमम आपको 1 साल करना पड़ता है. आप चाहिए तो ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम यू हैव टू टेक एटलीस्ट 1 year. So I think I have mentioned about self learning print. इनका ऑनलाइन टेक्स्ट बुक्स होता है जो आप डाउनलोड करके ले सकते हैं. अदर देन दैट, आप जब एडमिशन लेते हैं आपके पास बुक्स भी आ जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी इनका मटेरियल होता है, वीडियोस होते हैं, इनके ऑडियो टेप्स है, साइन लैंग्वेज पे बुक्स होते हैं, एंड उनके वर्कशीट्स भी एक्स्ट्रा दिए जाते हैं. सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाता है. एंड इनके बहुत सारे ऑडियो प्रोग्राम्स भी होते हैं NIOS के, जिसको मुक्ति विद्या वाणी प्रोग्राम्स कहते हैं. एंड रेडियो प्रोग्राम्स भी है. अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट यूज दिस रेडियो प्रोग्राम्स, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट अदर एवरीथिंग आई हैव ट्राइड, बट दे आर क्वाइट एक्सेसिबल एंड वेरी फ्लेक्सिबल इन दैट वे. आई विल मूव ऑन टू इनका जो बेसिक प्रॉस्पेक्टस रहता है, मैं उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. सो इनके 3 लेवल जो स्टार्ट होते हैं. फर्स्ट इज लेवल A, जो ग्रेड 3 लेवल का है. उसमें आपको मिनिमम 4 सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं. तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको 3 ग्रुप में से लेने पड़ते हैं. इनके पास 3 ग्रुप्स रहते हैं, ग्रुप A, B और C. ग्रुप A में आपको सारे लैंग्वेजेस आ जाते हैं. I'll just show you. इसमें सारे लैंग्वेजेस हैं, सो आपको इनमें से एक लैंग्वेज कोई चूज करना पड़ता है. और रही बात ग्रुप B एंड C की, इसमें से आप एक एक तो मिनिमम आपको लेना ही पड़ता है. आप एडिशनल जो है वो एकेडमिक सब्जेक्ट से चाहिए तो ले सकते हैं. सो आप एकेडमिक सब्जेक्ट से चाहिए तो 2 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, बट आपको मिनिमम जो है वो 4 सब्जेक्ट्स लेने हैं. और हर एक ग्रुप में से मिनिमम यू हैव टू टेक 1 फ्रॉम ईच ग्रुप. Similarly for B level, that is grade 5 level के लिए भी सेम है. Minimum you have to take 4 subjects, 1 from each group. आप चाहिए तो एक्स्ट्रा 2 चाहिए तो ले सकते हैं, लेकिन 1 तो आपको लेना ही पड़ता है. इसके अलावा ग्रेड 8 लेवल पे you have to take 5 subjects. अगेन वहां पे भी कंपलसरी होता है कि आप हर एक ग्रुप में से एक एक ले, एक सब्जेक्ट चाहिए तो 3 सकते हैं to make it 5. मैं आपको ब्रीफली दिखाती हूँ कि कौन से चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स. सो ये ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए ये सारे लैंग्वेजेस हैं. ग्रुप A हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मराठी. ग्रुप B जो है, यहाँ से आप चाहिए तो 2 या 3 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं. इसमें आपको एनवायरमेंटल स्टडीज है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स है, वेदा है, विज्ञान है, योगा है. और प्री वोकेशनल जो है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, इनके पास कटिंग, टेलरिंग है, ब्यूटी का कोर्स है, फूड प्रोसेसिंग कोर्स है, टॉय मेकिंग है, फिर आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग है, फर्नीचर मेकिंग. जिन लोगों को एग्रीकल्चर और वर्मी कंपोस्टिंग का इंटरेस्ट है वो भी है, बेकरी है, चाइल्ड केयर असिस्टेंस, वोकेशनल स्किल्स. सो दीज आर ऑल द ऑप्शंस. इसमें से भी आपको एक सब्जेक्ट कंपलसरी लेना पड़ता है. Now I'll move on to 10th and 12th standard. अभी 10th and 12th standard में आपको 5 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं. तो 10th में मतलब सीनियर सेकेंडरी में अगेन ग्रुप A से आप एक या मिनिमम आपको एक तो लेना ही पड़ेगा. आप चाहिए तो 2 ले सकते हैं. बाकी का आपको ग्रुप B और C से लेना पड़ता है. इसमें आपको थोड़े ज्यादा चॉइसेस मिलते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी, होम साइंस, फिर इकोनॉमिक्स है, बिजनेस, अकाउंटेंसी है, डेटा ऑफ कंप्यूटर्स है. जो अपने ट्रेडिशन है, वेदास, संस्कृत, उस भी आपको चॉइस मिलती है. आप यहाँ से 1 सब्जेक्ट. सिमिलरली इट इज फॉर 12th विच इज कॉल्ड अ सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं ये लोग. 12th में भी ऐसा है. ग्रुप A से आपको 1 या 2 ले सकते हैं. ग्रुप B, C, D, E और F से आप सिर्फ एक एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं. आप एक इसमें से आप 2 सब्जेक्ट नहीं ले सकते. ग्रुप C से सब्जेक्ट लिया है फिजिक्स, तो आपको फिर कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, या F से. सो टोटली यू हैव टू टेक 5 सब्जेक्ट्स.
इन आपको चाहिए तो आप और 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, बट इन सी डी ई और एफ में से आप कोई एक एक ही ले सकते हैं उस ग्रुप में से। ओबी स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड का हो गया। वन regions that are given this, इसमें भी सिमिलर टू सीबीएसई काफी है, एनआईएस काफी फ्लेक्सिबल है उसमें। and they give you scribe, they give you a reader, they give you a lab assistant, अगर चाहिए तो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है अगर आपको चाहिए तो। एंड इवन लाइक चांस कोई इंजरी हो गई या आपका, तब भी आप ये सारे फैसिलिटी ले सकते हो। अगेन सेम क्राइटेरिया हो जाता है कि आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि मेरा नीड जो है वो जेन्युइन है, वो आप थोड़ा दिखाना पड़ता है। उसके लिए अगेन यू नीड एन आरसीएस सर्टिफाइड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू गिव यू द सर्टिफिकेट। इसमें एनआईएस में देर इज वन मोर फैसिलिटी विच इज देयर अदर देन एक्स्ट्रा टाइम एंड स्क्राइब एंड ऑल दैट, इज यू कैन आस्क फॉर परमिशंस कि मैं अपने बच्चे को क्लासरूम तक छोड़ के आ सकता हूँ। इसके लिए आप एक एक्स्ट्रा परमिशन ले सकते हैं कि मैं रूम के अंदर जाके अपने बच्चे को क्लासरूम में बिठा के आ सकता हूँ। उसके लिए यू कैन टेक एन एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन, एक्स्ट्रा परमिशन फॉर द केयर गिवर। Other than this, caregiver can also take an extra permission to sit inside the classroom. अगर आपको लगता है बच्चे को मोटिवेशन की जरूरत है and you have to sit inside the classroom, then you need to take an other permission, which is also you need to take the permission prior, not last minute. Last minute is not encouraged. Usually they give a permission slip, which you can take the permission slip and say that I need to be sitting in that classroom for the child's motivation. So mostly जो autism या किसी को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी रहती है, where they feel कि parent को अंदर बैठना classroom के अंदर, can take that. So NIS, this is basically, but if I have to go in depth, बहुत people है. If you ask, you have to show your you know कि मेरे को genuine difficulty है, तो then you definitely get your asking. You have to go certificate, show that my need is very genuine and I need this facility of writing. I have hand problems or writing, reading problems, and आपको मिलती है। टेक्स्ट स्पीच टू टेक्स्ट अगर आपको यूज करना है, कंप्यूटर आपको यूज करना है, दे ऑल अलाउ यू टू यूज दैट। देयर आर स्पेशल सेंटर्स कॉल्ड SAIED। तो आपको जिनके बहुत ज्यादा नीड्स रहते हैं, जिनको टेक्स्ट टू स्पीच यूज करना है या स्पीच टू टेक्स्ट यूज करना है या लैपटॉप्स यूज करने हैं, यू कैन एक्चुअली गो थ्रू देम। आपके एग्जामिनेशन वहां पे होते हैं एंड दे विल मेक श्योर कि आप जो लैपटॉप लेके आते हैं उसके पर और कुछ नहीं है, चेकिंग करते हैं एंड यू विल गेट टू राइट और टाइप इट यूजिंग योर लैपटॉप। आपको स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच भी आप यूज कर सकते हैं। So NIOS in that way is very very flexible in terms of choosing subjects. Time limit रहता है, ऐसा नहीं कि आपको एक ही साल में सब कुछ फिनिश करना है। You can take your own time. आप पहले 2 सब्जेक्ट फिनिश कीजिए, बाकी के 2 सब्जेक्ट आप बाद में भी कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर ले सकते हैं। You can do that. That kind of flexibility is also available with the NIOS. और साल में वैसे भी 2 बार एग्जाम्स होती है, so you know you can do it as per your convenience. So yeah, that's it. I think I'm open for taking any questions if you have. Taramani ji raised her hand. Taramani garu, please. हेलो। Yes ma'am. मैडम, मेरा बाबू का ना DMD का साथ मोया मोया प्रॉब्लम भी है, तो Okay. जिसके वजह से वो लिख नहीं पाता ठीक से। उसका हाँ एक बार स्ट्रोक भी हुआ था, तो उसके लिए NIS में मैंने उसका अगर हम लोग क्लास 5 से फैसिलिटी मैंने क्लास 5 हम लोग ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो वो लिख नहीं पाएगा। कल
मैंने आंसर्स के लिए दे पाएगा? हाँ, तो वो स्क्राइब ले सकता है, स्क्राइब फैसिलिटी है, स्क्राइब उसके लिए हो जाएगा, राइट। कोई और उसके लिए लिखेगा, ये आंसर बताएगा, कोई और उसके लिए लिख सकता है, ऐसे हो सकता है। हम्म। हाँ, और वो मैडम फैसिलिटी है। इसमें इसमें ऐसे में कितना खर्चा आता है? सी अगेन वो डिपेंड करता है कौन से लेवल पे आप एग्जाम ले रहे हैं, बट कंपैरेटिवली काफी चीपर है, काफी इकोनॉमिकल है एनआईओएस का ये लेना। मैं आपको एक बार प्रोस्पेक्टस उनका दिखाती हूँ फिर से। हम्म। ज्योत्सना जी, एक स्पेसिफिक डाउट है मुझे। जैसा हाँ, हमको पता है कि सीबीएसई स्कूल्स है, ये स्कूल सीबीएसई है, ये स्कूल एसएससी है बोल के समझ में आ जाता है। एनआईओएस स्कूल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना? नो दे से दैट एनआईओएस है करके। बहुत कम स्कूल्स है, लेकिन देर आर वेरी फ्यू स्कूल्स हु ऑफर एनआईओएस। हाँ। लेकिन जो है वो दे यूजुअली ना सिर्फ एनआईओएस स्कूल्स थोड़े कम दिखते हैं, बट इन विद सीबीएसई यू विल फाइंड एनआईओएस स्कूल्स आल्सो। ओके। You will एनी only स्पेसिफिक? NIO schools, you will also find CBSE NIO schools, ऐसे भी मिल जाते हैं। ओके, एनी आई मीन any specific list available anywhere, और how to identify, like जानना कैसा है कि एक रिमोट एरिया में पता करना है कि कहाँ पर है बोले तो हाउ टू आइडेंटिफाई, दैट इज द मेन। वो बहुत सारे लोग यही सवाल पूछ रहे कि मैम आप बता रहे हो एनआईएस है, वेबसाइट दिखाई दे रहा, पर इफ आई कॉल दोस पीपल दे से वी डोंट Okay, हैव okay. ऐसा, आई हम्म, मीन ऑथेंटिकेशन की, नहीं तो कहाँ पर हम्म। ऐसा मिलेगा कि देखो भाई यहाँ पर भी एनआईएस है? हाँ, दैट इज लिटिल डिफिकल्ट। व्हाट वी डू इज यूजुअली कोई ऐसी इंक्वायरी आती है ना, तो हम लोग स्पेशली किसी को मालूम रहता है कि कहाँ पे अच्छा स्कूल है, सबसे बेस्ट स्कूल कौन सा है, नॉर्थ में है, साउथ में है, कहाँ पर है, हम ऐसे पूछ लेते हैं। बट यूजुअली वी गो बाय साइट और वर्ड ऑफ माउथ, जिनको मालूम है ऑलरेडी, कोई बोलता है तो मालूम पड़ जाता है। सो ओके। ओके। या सो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, यू आर टेलिंग समथिंग। नहीं, आई थिंक वो कॉस्ट का, तो लेवल वाइज यहाँ पे जो कॉस्ट है थोड़ा चेंज हो गया होगा, बट ये भी वैसे रिसेंट ही है। लेवल 1 ए के लिए 300 रुपीज है एडमिशन के लिए। ए मतलब ग्रेड 3 लेवल के लिए 300 है, ग्रेड 5 को 500 है, ग्रेड 8 के लिए 800 है। अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो 50 रुपीज ऑनलाइन चार्जेस है। दिस इज जस्ट ब्रीफ दे रही हूँ मैं, आई थिंक ये थोड़ा लास्ट ईयर का होगा। नहीं मैम, चेंज नहीं हुआ है, सेम सेम है। ही है ना। सेम सेम है। हाँ, आई थिंक यू हैव डन इट रिसेंटली, नो, या आई सो। डन द एडमिशन ऑफ आदित्य वेरी रिसेंटली। और रेगुलर एग्जाम्स को आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है, साल में 2 बार होते हैं, मार्च में और एक बार अक्टूबर में। लेकिन अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम्स लेते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा फीस होता है फिर। हाँ, अच्छा तो मैडम, ये- मैं और कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ हेलो जी। हाँ, मैडम, एक्चुअली हम लोग का यहाँ पे, हम वैजाग में रहती हूँ। तो वैजाग में जो है कौन सा स्कूल में एनएस का फैसिलिटी है, इसका तो हम लोग को भी ठीक से जानकारी नहीं है। तो अच्छा। मैडम ये थ्रू तो ऑनलाइन हो सकता है क्या? मैंने हाँ, स्कूल हाँ, नहीं जाके, क्योंकि मेरा बाबू को प्रॉब्लम है स्कूल जाने में। हाँ, हाँ, एनआईओएस तो ऑनलाइन के लिए ही बना है। जो लोग स्कूल नहीं जा सकते हैं, जो ड्रॉप आउट है स्कूल से, या तो फिर कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई टेनिस खेल रहा है, या हमारे जो बच्चे हैं डीएमडी बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते, उनके लिए ये परफेक्ट है। आप एडमिशन से लेके एंड तक पूरा घर में ही ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको बुक घर में आ जाएगा, वो बुक्स जो आपके हाथ में है। मेरे पास बुक है यहाँ पर, लेकिन एनआईएस की बुक होती है मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी ऑनलाइन वाला बुक यूज करती हूँ। ऑनलाइन पे भी बुक मिलता है आपको। ऑनलाइन पे वीडियो है उनके एक्सप्लेन करने वाले, जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कराते हैं कि ये चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे, जैसे टीचर पढ़ाती है वैसे ही उनके वीडियोस लगाए हुए हैं। वर्कशीट्स है उनके, साइन लैंग्वेज के भी वीडियोस हैं। आप सब कुछ घर बैठे कर सकते हैं। इनके पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम्स हैं जो 15 होते हैं, 15 सैटरडेज को होते हैं। वो अगर आप ले सकते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं ले सकते तो भी इट्स ओके, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। आपको सिर्फ एग्जाम वाले फॉर दिन एग्जाम्पल जाना मैडम, पड़ेगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल क्लास 5 के लिए मैं पूछ रही हूँ। क्लास हाँ, 5 के लिए 1 ईयर के लिए ऐसी ऑनलाइन अगर हम चूज करते हैं तो कितना खर्चा पड़ेगा फुल 1 ईयर के लिए? देखो, लेवल ग्रेड 5 के लिए लेवल B आता है, दैट मीन्स 500 तक खर्चा आता है फॉर द एडमिशन। उसके अलावा और ज्यादा कोई खर्चा मुझे नहीं लगता है, एनीथिंग आता है, बहुत मैंने नॉमिनल पूरा रहता है उनका। साल भर का ऐसे ही हाँ, आप ऑनलाइन कर उतना रहे भी हो ज्यादा ना, नहीं आप हो।
आप तो स्कूल नहीं हाँ जा रहे हो, आपके स्कूल की ऑनलाइन। कोई भी फैसिलिटी नहीं ले रहे हो, आप घर से ही कर रहे हो सब कुछ। नहीं, हाँ एक्चुअली स्कूल जाने के लिए ना मैडम उसका दो दो प्रॉब्लम है। एक तो डीएमडी है, ऊपर से बैड लक है कि मोया मोया भी है। और एक बार हम्म। स्ट्रोक होके उसका राइट हैंड और राइट लेग में प्रॉब्लम हो गया, वो हम्म। जोड़ नहीं दे पाता। तो हम्म। लिखने का भी दिक्कत है, चलने का फिरने का भी दिक्कत है। तो हम्म। उसके लिए हम लोग सोचा कुछ ऑनलाइन में, और भी थोड़ा लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, ऑनलाइन में थोड़ा ज्यादा खर्चा बोल के इसलिए एनआईएस को चूज करने के लिए सोच रहे हैं। हाँ नहीं, एनआईएस आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आप घर बैठे ही एडमिशन लेके आप बुक्स में से पढ़ सकते हैं। आपको ऑनलाइन भी हेल्प मिल जाएगा, देर आर सेंटर्स हु विल हेल्प यू, प्राइवेटली भी आपको हेल्प करेंगे करने के लिए। सिर्फ आपको एग्जाम के टाइम पे जाना पड़ेगा। तभी आप उनको बोल सकते हैं कि हमको ग्राउंड फ्लोर पर ही चाहिए, बच्चे का ये प्रॉब्लम है, हाथ और पैर में डिफिकल्टी है, मोबिलिटी इश्यूज है। तो वो आपको ग्राउंड फ्लोर पर ही रूम दे देते हैं। और आपको स्क्राइब भी मिल जाएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो आपको एक स्क्राइब मिल जाएगा। आप किसी को बिठा के वो एग्जाम दे सकता है, बच्चे को आंसर बोलना है, कोई और उनके लिए लिख के दे देगा। सर्टिफिकेट रीडर भी मिल जाएगा, मैडम। लैब के लिए भी आपको हेल्प मिल जाएगा, अगर कोई साइंस का लैब भी है तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिल जाएगा। अच्छा, मतलब जब एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा हमको, ये मैंने अपना स्टे वैजाग में ही हो मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, आप ना गूगल कर सकते हैं स्टडी सेंटर्स, एनआईएस स्टडी सेंटर्स इन वाइजैक नियर मी। आपको बहुत सारे सेंटर्स मिल जाएंगे, वाइजैक तो वैसे ज्यादा रिमोट एरिया भी नहीं है, यू विल डेफिनेटली गेट स्टडी सेंटर्स। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। स्टडीज एनआईओएस स्टडी सेंटर्स करके अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे सेंटर्स मिल जाएंगे नियर में, कहाँ पर है करके आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लग रही है तो आप रीजनल सेंटर में कॉल करके भी बोल सकते हैं कि मेरे को ना स्क्राइब चाहिए या टेक्स्ट टू स्पीच चाहिए, स्पीच टू टेक्स्ट चाहिए, तो वो लोग आपको ज्यादा बेनिफिट्स क्या क्या आप और कर सकते हैं वो भी बता देंगे आपको। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। या यस, पिंकी, आई थिंक पिंकी यू वांट टू आस्क, पिंकी। There is one question in the chat box. I'm looking for admission to schools which support CBSE and NIS. Is there any difference in the admission process? उसने अपने को पूछा हिंदी समझेंगे। हेलो मैम। हाँ हाँ, यस, या टेल मी। मैम मेरा सन डीएमडी पेशेंट है, हम ऑलरेडी स्टडी ऑनलाइन ही कराते हैं। अच्छा। पर आप जो बोल रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर हम एडमिशन ले सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप तो बिल्कुल वो ले सकते फॉर्म भी हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन करना होता है? हाँ, सब कुछ ऑनलाइन ही है। इनके दो अच्छा। बार एग्जाम रहते हैं। आप हाँ हाँ मार्च मार्च में एक बार होता है एंड हाँ। अक्टूबर नवंबर में एक बार होता है। स्टडी अगर सीबीएसई बोर्ड? सीबीएसई बोर्ड है, आप तो अच्छा सीबीएसई बोर्ड से आप एनआईओएस में शिफ्ट हो सकते हैं, आप ऑनलाइन ही अच्छा। एडमिशन ले से हाँ ऑनलाइन ही घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, और फिर उसके लिए ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? देखो मोस्टली उनका ना, इवन द करिकुलम मैंने देखा है ना, वो लोगों ने डिवाइड कर दिया है। अच्छा। करिकुलम में अगर 10-20 चैप्टर्स है ना, उसमें से 10 चैप्टर्स आपको टीएमए में आते हैं, मतलब ओपन बुक्स आते हैं, तो वो आपको दस हाँ, चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत क्वेश्चन नहीं है। आपका कम हो जाता है। तो हाँ, काफी बर्डन थोड़ा कम इजी होता है। है और एक्सेसिबल है, उनके वीडियोस भी हाँ। हैं, आप वो ना बार बार देख देख कर आप सीख सकते हैं। बट अगर अच्छा आपको चाहिए, आपको लगता है ट्यूशन की जरूरत है, तो ट्यूशंस भी अवेलेबल है जो अच्छा, आप। उस वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है? हाँ हाँ, ऑनलाइन कराते अच्छा, हैं। ये तो उनके अच्छा है पर्सनल, क्योंकि। उनके स्टडी सेंटर्स में अगर आप जाएंगे, उनके पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम्स हैं, वहां पे आप अच्छा जाके प्रैक्टिकल भी, थियोरी, फिर आपके जो जो डाउट्स है वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, क्लियर कर सकते हैं, और 12th स्टैंडर्ड तक हो सकता है? हाँ, 12th स्टैंडर्ड तक हो सकता है, तो ये 10th। बोर्ड के एग्जाम ऑनलाइन कैसे करते हैं? नहीं, एग्जाम के लिए आपको जाना पड़ेगा, स्टडीज आपको जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एग्जाम के लिए आपको हाँ। उस दिन जाना पड़ेगा। आपको 5 तो सब्जेक्ट लेने हैं। ओके। अच्छा, वैसे आप एक्स्ट्रा और 2 लेंगे तो 7 हो जाएंगे, नहीं तो 5 सब्जेक्ट, मतलब आपको 5 दिन जाना पड़ेगा एग्जाम के लिए। नहीं मतलब क्योंकि 5 सब्जेक्ट में कौन कौन से होते हैं? ये मैथ, साइंस, एसएस, हाँ, मैंने इंग्लिश? अभी अभी आपको दिखाया ना, हाँ। आपको ग्रुप एक लैंग्वेज लेना पड़ता है, एक प्री ओके वोकेशनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, मतलब पेंटिंग या कंप्यूटर्स या ऐसे कुछ। ओके। और बाकी के जो 2-3 हैं वो आप साइंस, मैथ्स, ईवीएस,
मैंने ऐसा देखा, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अभी दिखाया था, एक सेकेंड, आई जस्ट। मतलब 5 सब्जेक्ट लेने हैं हाँ, 10th कंपल्सरी, वो 10th के लिए। हाँ 10th के लिए देखो 5 सब्जेक्ट्स आपके बताती हूँ आपको। ये दिख रहा है क्या? एक सेकंड, मोबाइल में जब मीटिंग ज्वाइन किया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है। अच्छा, नहीं आप बाद अच्छा, में आराम हिंदी से इंग्लिश दोनों। इसमें भी जाके देख सकते हैं। आपको ग्रुप ए मतलब लैंग्वेज कोई भी एक ले सकते हैं आप, हिंदी इंग्लिश ओके। जो भी आपको कंफर्टेबल है। ग्रुप बी जो है वहां से आप 2 ले सकते हैं, 2 या 3 ओके, ले सकते हैं। मैथमेटिक्स है, तीन। साइंस है, सोशल साइंस है, हाँ हाँ, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज, ठीक है। होम साइंस एंड ऑल लोग बहुत प्रेफर करते हैं बिकॉज इजीली हो जाता है। होम हाँ साइंस, इजीली पेंटिंग, बच्चे खुद कर सकते कंप्यूटर्स। हैं। हाँ, और कंप्यूटर्स भी बहुत बेसिक रहता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आराम से तो पास हो मतलब जाता है। ये दोनों एग्जाम में बच्चे को लेकर जाना पड़ता है कि ऑनलाइन होती है? एग्जाम के लिए आपको लेके जाना पड़ता है, एडमिशन और बाकी हाँ। पूरे साल भर आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैडम ये सेंटर कहाँ पर होगा? ये आपके घर के, आप थोड़ा गूगल मारिए, बहुत सारे सेंटर्स हैं उनके। आप क्योंकि हमारा बच्चे जो पहले स्टडी करता था ना, वहां पर वो मैडम बोल रहे थे कि हमको अभी परमिशन नहीं मिली है, तो आपको कहीं पर भी सेंटर में जाना पड़ेगा, कहीं भी हाँ, आपको भेज स्कूल में सकते नहीं हैं। होगा, उसको ना हाँ एनआईओएस स्टडी सेंटर बोलते हैं। आप हाँ, जस्ट स्टडी गूगल सेंटर। कीजिए एनआईओएस स्टडी सेंटर नियर मी, आपके हाँ, एरिया में जो भी पास में है आपको वो पास स्टडी में है। सेंटर मिल जाएगा। अगर नहीं ओके, मिलता अच्छा। है तो यू कैन कॉल मी, रमा जी के पास मेरा नंबर रहेगा, आई कैन अच्छा हेल्प है ये नंबर। कहाँ पे और ये कौन। इसकी पूरी डिटेल्स अगर किसी को सर्च करनी है तो है ना इसकी साइट? हाँ, इसकी वेबसाइट ना मैं आपको एड्रेस दिखाती हूँ, nios.ac.in है इनका वेबसाइट एड्रेस, मैं आपको हम चैट में डाल देती चैट हूँ। में डाल दीजिए मैम। हाँ, चलो। पिंकी जी आप कहाँ से बात कर रहे हो? पिंकी वीरानी जी आप कहाँ से बात कर रहे हो? There's one more question in the chat box, no? I was looking at that. Yeah, there was one. Somebody said if they are. For some schools, I think Nitya wanted to know, they're looking for some schools which support CBSE and NIS. Is there any difference in the admission process? There is not much difference in CBSE and NIOS, but finding schools with CBSE and NIOS will be little a challenge, you know. बहुत कम schools ऐसे हैं जिन्हों के पास CBSE भी है और NIOS भी है. So that might be a challenge. बहुत कम ऐसे schools होते हैं जो NIOS offer करते हैं. So that might be a little challenging, but admission process is वही same है, जो documents basic लगते हैं, you have to just submit that and the fees and you will get the books later on. वो process रहता है. Anyone has any questions, please raise your hands. If not, we have a few questions which are being asked earlier, like we will be asking them. Yeah, shall I go ahead, Rama, about those? 1 minute, ma'am. I'm just asking if anyone has any questions. I hope you can take it forward. Yeah. First is somebody wants to know their child never went to school. He's 12 years. How can he start education? Which class will he be eligible then? I don't know if they were doing homeschooling. I'm not sure of that. Okay, 12 years, no? So usually they will take a small assessment to see where the child is, you know, to see the level of the child, and accordingly, you know, they will give you the admission and they will guide you with that, you know, which level he should take. But ideally, I prefer if the child has never gone to school, then he should start from the basics of reading, writing, at least that basic knowledge the child should have. So one round of basic assessment will be required Okay. to see where the child is and at what level the child is, you know, to give the child admission. So that assessment can be done from outside. You can do it from any RCI certified person. You can just get it certified to see where the child is, and then you can go with that certificate and say,
that my child is 12 years or 15 years and the child's level is this. So that will be, able to, they will be able to judge where to actually place your child. Another parent has said that the child stopped education from 7th standard due to accessibility issues. So can they just shift transfer to NIOS or any online? Yes. Yeah. Will there be any direct exams? Any entrance exams is there for any child, or how many times do you have admissions? Is it continuous throughout the year, or how is the process of admission? See, one is the child is in 7th standard, so he can directly apply for 8th standard and he can do. Once you apply, it is there for 5 years. Your admission is there for 5 years and you can actually try 9 times, So if you don't clear in first round, you can try it 9 times. So your admission is available for 5 years. In that 5 years time, you have to complete your 8th standard. If not, again, you will have to do a reapplication and reapply and again take 5 years of time to clear 8th standard. But only once you clear 8th standard, then you can move on to 10th, that is secondary education. Without that, you will not be able to jump. Yeah, this is one thing for Deepthi ma'am also I want to ask. Do you have any individual education plan, ma'am, that exists in any schools, and in which states is it IEP? The individual education plan is something that as a school we provide for a child with any kind of need. Okay. It is not something which is mandated or anything. It is just that is the way a special educator works, and it's what is the child's level. For example, if I'm working on say if child has some reading difficulty or writing difficulty, then I create a plan such that I work on that skill. Okay, teaching the child to read. So then I set goals for the child, and but if each stage, what the child needs to achieve. Okay, so IEP is a process which the school does, but it is not as such written by any policy or anything neither under CBSE or NIOS or any other, I think any other board for that matter. It is a process that is followed by special educators basically it's a process of special education actually that we follow process of IEP. So it is to set goals basically. So that the child moves along a certain, so we can see, movement of the child from one point to another point. If the process is very slow, for example, if the child is now, they say is great, he's 7-year-old and he's still learning his sounds or he's still learning. So we need to now set a goal so that say 6 months now, what are we expecting this child to do? So those things fall under an IEP, and it is wherever there are special educators, in whichever schools there are special educators, I think they do follow an IEP. So parents have to check if a particular school has a special educator, and then special educators are not mandatory for any of the CBSE schools in case there are children. CBSE has mandated right now that every school should have special educators. I think most schools have. Sometimes it is just one special educator, and if that is just one special educator, and if there are many children with needs, then the whole thing gets diluted, I would say. And the purpose of having the special educator to meet the needs of every child that is needed, it's not that effective. Okay, unless the school is really there. There are some schools where there are 5 or 6 or sometimes 7 special educators working with different children. Ideally, it benefits the child only if the special educator is able to meet the child at least 3 to 4 times in a week. Then we can see progress in the child. But if the special educator only meet only once in a week, then it is just because it is there and it's happening. That's it. I mean, it's not really making any difference to that child. Yeah. So are there any subjects which are exempt from, and how does this work at the higher levels, like say secondary and higher secondary? How does it work? Again, okay, it depends on if his child is intellectually or is at grade level and is having some difficulties. For example, he's having spelling issues or he's having writing issues or reading issues, those kind of things. Then what the exemptions given, like I said, was just like NANAs, you need to have one, what CBSE says is one language, okay, and you can take 4 subjects. Okay, and those 4 subjects could be math, science, social, could be music, painting, home science or information technology. I think these are about 6 to 7 options that are there. Between these, you can choose 4 subjects. Now, schools don't offer all of them because they're not registered for these subjects at the board level. Okay, so the school has to register. For example, if your child say, I don't want to because it's I'm not able to do math,
then the child can drop math and pick up, say, a lighter subject, say information technology, home science, or painting. What is the benefit of that is the theory part is less. For example, in our school, we offer painting. 30% is theory and rest is 50% is practical. Now, the practical is done at the school itself. Only the 30% theory the child has to attempt at the board. Okay. And the rest, another 20 marks is from internals. So overall, there is not so much pressure on the child in terms of how to perform in painting. Even if I'm not such a great artist, I still can manage to do decently well in that subject. Okay, same holds with all the subjects like information science and computer applications, where more marks is given to practicals. And that practical happens till grade 10, it happens internally in the school. At grade 12, yes, we have an external invigilator, but at grade 10, it happens within the school. So the teachers train them to take those tests. That's it. Thank you, ma'am. And one person has said that their child can't hold a pen or pencil, but can type. So how do we ensure? Yeah, computers are allowed in CBSE also. Computer is allowed. I think there are children. I saw someone in the chat box saying my son is in 9th standard taking typing. He types his answers, which is allowed. So will the school teach a child to type? Is again that conversation you need to have with the school if someone can teach him, or it has to be done at home. And then you teach the child to type and he is allowed to take type answers. All these are conversations that we need to have with the school management saying, this is how my child is going to be learning. So, it's going to be typing and it's not going to be writing. Okay, so then your assessments need to be, say, for example, internal assessments and things like can be modified for that child. It is not specific, doesn't specify, okay, I need to do it this way, so that you get those 10 marks. Okay, so certain things within the school can be modified for the requirement of the child. Are they proctored for the exams or something? How do they ensure that the laptop is, if it is physical one, it's okay, but where it is online test, how do they proctor the exam? There are no online exams, ma'am, unfortunately for CBSE. It will be a physical exam. Child has to go to the examination center and there will be an invigilator, especially for the child who's taking exam on the laptop. Okay. Another parent has asked, as a mother of a special kid and primary caregiver, can I go as a shadow teacher to my for my kid in the class? Yeah, some schools allow parents to be shadow teachers. There are many schools which will not allow the parent to be the shadow teacher, but other shadow teachers are allowed. Okay, so the only reason being miscommunications and then unnecessary, this one. But if the child, again, it's a conversation, I would say. If some schools are willing, if the child is comfortable, the parent, they might be allowed to sit in the classroom with the child. Only thing you should know as parents, we should remember not to interfere in the school processes. That is the only thing. As long as it's for the child, yeah. Then parents also want to know, how do we inform the schools about the issues that the kids have? Suppose a child is in class 3 and the class is in the first floor and they don't keep it down each year. So especially if you have DMD children who can't climb up, who have mobility issues. So how can they ensure that the class is kept in the ground floor? This is again conversations only, but as I say, CBSE has mandated there should be some lift systems in the school, and it doesn't matter now. It's whether so they've said primary schools normally grade as per the NEP also nursery to grade 2 are supposed to be on the ground floor and first floor maximum, not beyond that. Okay, that is a mandated thing, but they're supposed to be lifts. So children should be moved to whichever classroom without any problem, whether they're on the wheelchair or not. They should be able to access the classroom. That is a basic requirement. And it is not necessary to move the classrooms down in that case. If there is a lift provision, then I think the child is free to move within the school wherever the class is. Provided. Okay, fine. Can I just add in here? So what happens is a school gets a CBSE affiliation only on the condition that I will create a lift or I will make the facility of lift within 8 years or 7 years. Actually, it is mandatory, but nowadays schools are not doing it because they have this conditional affiliation that they get. So they say that we will have a lift facility, but give us some time of 8 years, 10 years, So that is called as conditional affiliation. And that's how there are many CBSE schools, but there are no lifts in the school. So that is right now the situation. If suppose they're denied admission because, though technically they may not give it in writing, but orally many times they, during the interview process or some other, so for some reason, because this is something which most of the parents tell that, we have been denied admission and they're scared to go to the disability commissioner because there is, fear of the consequences of complaining against the management. So how does one tackle such issues? If suppose the management is not cooperative?
I really don't, there's no solution here. It is, there are, what I say, you have empathetic leaders and non-empathetic leaders. Now, if the leadership is non-empathetic in a school, I personally would not put my child in such a school, even with a fight. Okay. So, because ultimately it's going to affect that child in other ways. In other ways, in whatever it is, emotional or this, maybe the school might not take any action against the child for whatever reason, but that constant conflict of interest, if it's going to be there, is not going to be easy. Okay, but if the a school is willing to listen, if the leadership is there, at least they're willing to listen to you and to have that conversation with you, then there's at least that, okay, you can, I know these are the reasons, and then you can bring in and try to make those provisions for your child. But if they're not listening to you, yes, you can raise the point. I mean, you can raise the point, but I would prefer that don't put your child there. You can still fight the cause, but not put your child over there as of now until things settle over there. There's no mandatory rule. Of course, the Right to Education Act does provide That for itself is a mandatory rule. So Right to Education Act says that all children you cannot deny admission. The Cbse also says you cannot deny admission based on disability. It's very clearly written there. Okay, it's very clearly written, you cannot deny based on any disability. They cannot deny, at least on that phase, they cannot deny it. Okay, Is there any permission for caregivers to be provided by them, or can the parents take the caregivers to the school? School normally, again, is the experience comes only from children with learning disability autism. So what we do is we ask parents to get shadow teachers, and the shadow teacher remains with the child through the day. But if whenever the parent has come in as a shadow teacher, we as a school, we have not accepted it. Is it, please get somebody else, because somehow we feel that when this child is in school, he needs to adjust with his surroundings. He needs to acclimatize with the teacher, needs to acclimatize with the, if he's always going to be constantly with the parent, then that's not going to help the child. And hence we say no parent in the classroom. Will the school provide everything? It's a very long conversation. You need to pay for it. So the point, even with shadow teachers, if you see, today are equally paid as a teacher. So you're paying fee, and additionally you'll be paying that much amount itself for a shadow teacher to come into the classroom. So it's almost, so it's a big, I don't know how to say this, but parents find it very difficult to kind of balance both of it and take it forward. School as such has no obligation to provide every facility. The basic minimum requirements is what they do. But additional facilities like caregivers, chat teachers, these are something that a parent normally has to provide you. Thank you, ma'am. That was informative. Rama, if anybody else is there wanting to take questions. I don't find anyone raising the hand, ma'am. Somebody has asked, what is OBE in NIOS? What is exactly? I think you did cover it up, but if you can just repeat that, ma'am. Jyotsna, ma'am. Yeah, it's an open basic education programs, which comes at 3 levels, A, B, and C. So level A is equivalent to grade 3. Level B is equivalent to grade 5 in any other school. And grade C is equivalent to grade 8. Okay. And this is recognized globally, or is this NIOS, I mean, whatever it is, given education? No, it is recognized. It is recognized. No issues there. Okay. Thank you, ma'am. Rama, if you want to add on to something and ask anything more. Nothing, ma'am. Very informative. I hope those who have logged in might have got some insight on continuing their kids' education or start to give education to the kids. My only intention was to ensure parents who are not providing education to at least know that there is a system of NIOS. That is the only concept of doing this on a very, I mean, all of us know that today is a International Disability Day. Might not have been a better day than this. Yeah. Well, somebody asked, is NIOS available for 10th standard? Yeah, 10th standard is also available. They call it as secondary education. And 12th standard, they call it as senior secondary. So till 12th standard, they have, other than that, also they have some employability courses, vocational courses, which they have. Those courses are also available. You can check it on the website. I have actually placed it in the WhatsApp chat. I'll just put it once again. Yes. You can just check it out here. There are a lot of options for even vocational courses.
One specific doubt in my WhatsApp chat, what they're asking is, my kid completed inter or 12th standard. Now we are talking only about the CBSE or NIS up to 12th standard or 10th standard. After that, what it is? I think for this, we need to take a separate session after 12th. Few of them have. Yeah, after 12th, yeah, you can actually go in any, it depends on your interest basically. But from what I know, there are many centers who are training for employability skills, vocational skills, and they also provide assistance for job. So it's not like 12th and it's the end. You have to go beyond that, and you can go beyond that and find places. It's not easy, but depends on the child's interest again. What kind of field are you looking for? Will they be eligible for any competitive exams, ma'am? Like Yes, 100%, yeah. Yeah, 100%. If they are, see, if child wants to continue and wants to study from home beyond 12th, there are other online universities also. You have IGNOU, you have open universities. I think all states have their own open universities. And at the national level, we have Indira Gandhi University, from which they can complete their degree. They can even do their masters. They can do a PhD sitting at home. It is all a possibility. Education need not stop because I can't move out of my home. Yeah. Even we are daily learners. Every day we learn something new. Exactly. Yes, Sharda ma'am, I think. I think we have covered most of the things. So anyway, thank you, ma'am. Thank you, both of you. It was a wonderful session. And really, really, we gained a lot of insights. And I hope many of the parents' questions have been answered, because this is one area where parents are always, they feel bad that they're not able to provide the required basic right of the children, right to education, because of so many constraints. So I hope they have gained at least, and we'll look into continuing the children's education, which is much needed. And what I just have one small query: the difference between homeschooling and this is NIOS is a little different, right? And what can you advise for the homeschooling, whether they should go in for online like this? And because some parents are doing homeschooling. Yeah, I think it's their personal choice. But if you ask me, I think NIS is it's a better option. But I think it's a very personal choice. If they're looking for something else, it depends where they are comparing it to, which other school or which other kind of, option are they looking at. But Most of them are not aware, actually. Most of them are not aware. So this is like, see, NIOS, say NIOS or CBSE or ICSE, or these are boards which kind of give you they certify you at a certain level, right? At the age of 16, they certify you at secondary, or at the age of 18, they say certifying you as senior secondary, or whatever age. I mean, it doesn't even matter. The age doesn't matter here, but they're certifying you at, okay, your grade 10 passed or your grade 12 passed. It's just a certification. Homeschooling is one, like you're teaching at home, okay, all the necessary skills at home, and it could be the same curriculum that you can teach. For example, NIOS curriculum can be taught at home. A CBSE curriculum can be taught at home. But if you want to certify yourself, I want to say at the national level, where am I placed? I need to take an exam, and that is an NIOS exam. So NIOS is just an exam to certify. So, but they've also provided, these are the things that you can learn to take that exam. For your primary years, you can choose what you want to teach your child, how you want to teach your child, bring them up to literary standards or numerical standards, and then take them through the NIOS 9th and 10th board. I mean, basically grade 10 exam. Like OB is still it's an optional thing, right? It's not even mandated, the OB. OB is not a mandated choice. It's only an option. You can directly do a grade, when the child is 14 years, register and take an NIOS grade to check whether the child is certified at that level. That's it. Ma'am, in NIOS, how do the labs, like suppose if you have taken physics, so how do you do the lab part component? How do you cover those things? What so they have the study centers, which will be near your area. And you can go there, and they have, I think 15 Saturdays or something. So they are basically open on those Saturdays at that time, where you can clarify your doubts and you can do your practicals also. And they are the ones who will also give you marks for your practicals. So you can do the practical part there and finish it. Oh, that's very good. I think all questions done. 1.5 hours is completed. I think all of them are done. Yeah, all of them have been covered.
Great. Thank you. Yeah, I hope it helps our information, what we have shared. Anyways, if there are more queries, please, you can forward it to them. You have our numbers, so you can definitely forward it to us. We can take more queries. Sure, ma'am. Thank you. I'll connect with them one-on-one to you. That would be better. Yeah. Thank you for so a much. wonderful session, ma'am. Thank you very much, both of you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.